Well, good morning, everyone, and welcome back to data structures theory session. In previous session, we completed our Q part. So, if you have attended the last session yesterday, we have covered double-ended queue and a priority queue. Look, once again, let me tell you, double-ended queue and priority queue is just as a theory topic in your syllabus. Need not to cover any operation on that, or even there are no algorithms on double-ended queue or priority queue. You just need to understand how it works and what is the use of double-ended queue or even a priority queue. How you can create priority queue using two-dimensional array or maybe using linked list. Just a representation, no algorithm there. So in this second unit till now, what we have gone through is we have completed array, stack, and queue part. We are discussing linear data structures. So your data is organized in a sequential manner. That's why we call it linear data structure. So we are done with array, stack, and queue, and the last point or the last data structure that remains in discussion is the linked list. So let us start this linked list now. In your array, you have gone through number of points, stack, queue also, and now we are going to discuss linked list. So this is what we have to go through as per the syllabus given by the university. We'll start first understanding how linked list looks, how it works. And then there are types of linked list we have to cover: singly linked list, doubly linked list, singly circular, and doubly circular. Okay, so singly linked list, doubly linked list, then circular linked list means singly circular, and circular doubly linked list means doubly linked list but in a circular manner. And at the end, we will discuss few applications of linked list. Apart from this, there is one more point which is not listed here, but it's important. We need to understand how array and linked list differs. What are the plus points and minus points of arrays and linked list? So array versus linked list. That's what we will also discuss in this part. Okay. So in unit 1, we have looked at how linked list looks. Now, that was a simple singly linked list discussion. We'll start with the same thing here again. So what is linked list? Again, linked list is nothing but a sequential collection of nodes. A sequential collection of nodes, group of nodes. Now, in a simplest form, if we are discussing about singly linked list, then a node will contain two parts, okay, data and a reference. So if you say you have a node, then it will have two portions within it. One where you can store your data, and the other one where you can store the next pointer. So the address of the next node. This is how your node will look like. Now, depending on your requirement and type of a linked list, structure of a node may differ. So this is a singly linked list node. If you are talking about doubly linked list node, then it will have three portions. One will be the data part, and two pointers will be there. One for the next and one for the previous. So in a doubly linked list, you will have both the directions pointers, next and previous. Okay. Now, if you go for tertiary, then it becomes a tree. It's not a linked list. So we have singly linked list, we have doubly linked list. That's it. Singly linked list will have a node containing two portions, data and next pointer. Doubly linked list will have a node containing three portions, data and two other pointers. Right? Now, this linked list structure allows us efficient insertion and removal of elements
compared to array. Now if you remember, अगर आप array के अंदर कोई नया element insert या delete करते हो, then you need to shift existing or other values. You have to shift existing values to either right or left. Now that shifting process is the iterative process, क्योंकि एक number नहीं, एक से ज़्यादा numbers, elements आपको shift करने पड़ेंगे. So that's the headache, that's the overhead, extra work that you have to complete in terms of array. But linked list में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, because we are just maintaining pointers. We update the pointer and we are done. किसी को कहीं खिसकाने की ज़रूरत नहीं है, right? You need not to push or pull anyone. Leave it where it is. You just update the pointer and you are done. So that's how we can say insertion and removal of elements are easy here, and compared to array it is faster here. Well, अगर कुछ benefit मिलता है तो कुछ drawback भी रहेगा. We'll discuss it. But this is how your linked list will work. So how singly linked list looks. Now this is the example. If you consider a node having two portions, data and next pointer. Okay. A node which contains only two fields, integer value, that's the data, and link to the next node, which is a pointer, then your singly linked list will look something like this one. You will always have address of the first node, which we store in head or start, whatever you call it. Okay, head or start, which will be pointing to the first node. Now that first node will have data as well as pointer to the next node. Second node का pointer वहाँ पे रहेगा. Then second node will have second data and the pointer to the third node, and so on. So you are preparing a list here by pointing to the next node, and the last node will have next pointer null, which indicates this is the last node. There is no further link available. आगे और कोई link नहीं है. I'm done. This is the last node. So we have understood this part also. Let's consider one more time. If your first node is somewhere at address 2000 in your memory, then you are going to store that address in your head or start. Yeah, okay, head or start, whatever you call, it's nothing but a pointer variable which is going to store that address. Now if, let us assume, second node is somewhere at address 4030, then that address is going to be stored in the next part of your first node. पहले node के next pointer में आप उसका address store करोगे. So it is going to be stored here, 4030. So that, okay, this is what the address of the next node. If I jump to that address, I'll have the second data. I'll have D2. And similarly, if you assume that your third node is somewhere at address, let's say 1030, then that address will be stored in the next part of second node, 1030. Okay, so that creates a link. We have also taken one example of remembering students' numbers. So being a head or a start, I'm only going to remember where is the first student, roll number 1 student in the classroom. Okay, classroom में student randomly बैठे हैं, so there is no sequence here. Just like the nodes, ये तीनों node randomly कहीं पे भी address आप देख लो, 2000, 4030, 1030, randomly ये node पड़े हैं. So students are sitting randomly in the class. Now being a head or a start, I'm just going to remember where is roll number 1. I'm just going to remember where is roll number 1. Now roll number 1 student knows where is roll number 2 in the classroom. So number 1 student को पता है कि number 2 वाला student कहाँ पे बैठा है. I don't know. Now if I want to search 5th student, तो हर बार मुझे तो कौन सा याद है,
number 1 याद है मुझे. So what I have to do is I have to ask number 1 student, भाई 2 कहाँ पे? तो वो बताएगा सर 2 is there in the first seat. Okay, 2 के पास जाके बोलूंगा भाई 3 कहाँ पे? So वो बताएगा सर लास्ट रो में बैठा है. So I'll go to the last row, थर्ड स्टूडेंट के पास जाऊंगा, उसको पूछूंगा फोर्थ कहाँ पे? So वो बताएगा सर वो लास्ट कॉलम थर्ड रो में बैठा है. वहां पे जाके बोलूंगा वेयर इज 5, तो पता चलेगा कि अच्छा 5 तो आगे ही बैठा था. But that's what happens with the linked list. Insertion and deletion operations are easy, but search operation is difficult here because you do not have address of any node. एरे में आपको अगर इंडेक्स पता है तो आप डायरेक्ट वो वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, राइट? एरे से आप डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस कर सकते हो इफ यू नो द इंडेक्स. But in linked list, there is no possibility you can directly jump to 5th or 6th node. You have to go through linear manner, one by one nodes. So search operation is somewhat difficult in linked list. But insertion and deletion operations are very much faster compared to array. Well, that's second point. But look, this is what the one more example of understanding linked list. Start will have address of first node only. After that, you as a developer, you are going to maintain all the links within your entire linked list. एक भी लिंक अगर गलत हो गया तो बाद का लिंक लिस्ट गया समझो. बीच में से एक भी अगर लिंक आपका गलत हो गया, if this link is wrong, then forget about D2 and D3. There is no way you can recover that part. आपको पता ही नहीं कि वो एड्रेस कौन सा था, मेमोरी में वो कहाँ पे स्टोर्ड है, यू डोंट नो दैट. सो अगर ये 4030 वाला लिंक गया, मिस हो गया आपसे, आपने उसको याद नहीं रखा, देन forget about D3 as well as means D2 as well as D3. D2 भी नहीं मिलेगा और D2 नहीं मिला तो D3 भी नहीं मिलेगा. So it's something like कि भाई रोल नंबर 6 स्टूडेंट पूरे क्लास में नंबर 7 को ढूंढ रहा है लेकिन उसको मिला ही नहीं. So 6 को नहीं पता कि 7 कहाँ पे है. अगर 7 नहीं मिला तो 8, 9, 10, 11, 12 कोई नहीं मिलेगा. Okay. So in linked list, maintaining links are important, very much crucial also. And this is what being happening inside your hard disk as well. Hard disk, HDD or SSD, कोई भी लिख लो, मतलब कोई भी ले लो. Your storage drive maintains a linked list inside. Do you know fragmentation? I don't know whether we have discussed this part earlier or not. Fragmentation or defragmentation. Earlier we were used to defragment our hard disk. काफ़ी समय तक आपने अपना पीसी यूज़ किया है और अगर वो स्लो हो गया है तो कोई बोलेगा भाई डीफ्रैगमेंट कर ले, स्पीड बढ़ जाएगी. फ्रैगमेंट्स मतलब आपका डेटा है जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए, कहीं अलग अलग जगह पे पड़ा है. नाउ इफ यू वांट टू गैदर योर एंटायर डेटा, देन यू हैव टू ब्रिंग दैट डेटा फ्रॉम मल्टीपल पार्ट्स. मल्टीपल पार्ट्स मीन्स दोज आर द नोड्स. एंड कभी भी मूवी आपको ऐसा तो नहीं मिला कि भाई पहला पार्ट आया देन लास्ट पार्ट आया उसके बाद बीच का पार्ट प्ले हो गया. नेवर हैपन्स दैट, बिकॉज इन योर हार्ड डिस्क योर 4 GB मूवी इज नॉट स्टोर्ड इन द 4 GB सिंगल प्लेस. वो जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे स्टोर कर लेगा, बट इंटरनली इट इज अ लिंक लिस्ट. मूवी स्टार्ट कहाँ से होता है, जैसे ही पहला पार्ट खत्म हुआ तो दूसरा पार्ट कहाँ पे है, that has a linked list. So your movie player is following that linked list only, and you have a continued movie. So in your storage part, there is a linked list. Now those parts are called fragments.
अब एक पार्ट खत्म होने के बाद दूसरे पार्ट पे जाओ, वहां से लेके आओ, दूसरा पार्ट खत्म होने के बाद तीसरे पार्ट के पास जाओ और वहां से लेके आओ. सो that creates, that jump process creates the overhead, and because of that reason your PC becomes somewhat slower. Because of fragments, you have to jump from one place to another, your speed decreases. So defragment process क्या करेगा? It will gather all those parts and keep it at one place. सारा जितने भी parts हैं वो एक जगह पे लाके रख देगा. So you need not to jump multiple times, and your speed will increase. Well, so that's something like D1, D2, D3 अलग अलग पड़े हैं. उससे तो अच्छा है कि एक जगह पे लाके रख लूं. अगर एक जगह पे लाके रख दिया मैंने तो ये लिंक मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So that's the defragmentation process. But let's keep it aside now and focus on the linked list. But that was one application of linked list. Remember, application of linked list. Linked list कहाँ पे use होता है? Hard disk storage device में linked list use होता है. Well, so a last node will have a terminator indication, null value, that indicates this is the last node and there is no further link available. Now, advantage and disadvantage, insert and delete operations are very easy here. We just need to update the links, but the search operation is difficult, as well as you are maintaining link to the next node. Next node का address भी आप store करते हो. So to store that address, you require extra memory here. You have your data, D1, D2, D3, data तो है, but with that data, you need some more memory to store the address of next node. आपका data तो D1, D2, D3 ही था. अगर array को सोचो तो 3 एलिमेंट में खत्म, लेकिन अगर लिंक लिस्ट को सोचो तो 3 एलिमेंट के साथ साथ 3 पॉइंटर भी आ गए, next pointers within each node. So that requires extra memory. Well, there is always a trade-off. Insert delete operation slow चलता है तो array use कर लो, memory कम चाहिए, right? लेकिन insert delete operation अगर जल्दी करना है आपको तो linked list use करो, लेकिन memory बढ़ जाएगी. So we discussed that there will be a trade-off between space and time. Time कम करोगे तो space बढ़ेगी, space कम करोगे तो time बढ़ेगा. Now you have to maintain as per your requirement what you can afford, right? So that leads to that trade-off discussion, arrays and linked lists, arrays versus linked list. So what are the drawbacks of arrays? array में क्या प्रॉब्लम था कि आपको लिंक लिस्ट की जरूरत पड़ी, और ऐसा क्या है लिंक लिस्ट में कि आप कभी कभी array भी यूज करते हो, right? Because both data structures are there, and depending on the need we are going to choose one of these two. Well, if you talk about array, then you must be aware of the size of your data, because arrays are always fixed size. When you declare your array, square bracket में आपको size देना पड़ेगा. अब मान लो कि if you go for runtime array, फिर भी आपको malloc calloc में size तो देना ही पड़ेगा. You have to know what are the number of elements I'm going to store here. भाई मुझे कितने नंबर स्टोर करने होंगे, 15, 20, 25, कितने? अगर यूजर से मांगते हो तो यूजर भी आपको एक बार वो नंबर तो देगा, भाई मेरे पास 20 नंबर्स हैं, and then you will go and use malloc to allocate a memory runtime. Still, size of that memory block is fixed, 20 elements, 15 elements, जो भी आपने फिक्स किया. So array is always a fixed size. You must know the upper limit to allocate a memory. Whereas in linked list, it is not needed.
लिंक लिस्ट क्रिएट करते वक्त आपको कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं कितने नोड होंगे, नेवर. व्हेन यू रिक्वायर अ न्यू नोड यू अलोकेट अ मेमोरी. अगर मेमोरी अवेलेबल है, मेमोरी मिल गया, नोड क्रिएट करो, डेटा स्टोर करो, लिंक करो, खत्म. जब तक मेमोरी अवेलेबल है आप नए नोड क्रिएट कर पाओगे. सो देर इज नो अपर लिमिट, देर इज ओनली वन अपर लिमिट. भाई टोटल मेमोरी आपके पास कितनी है? That's always gonna be there, right? So in terms of linked list, we need not to know the upper limit of our data. Run time, जब कभी भी data आएगा, we will create a node and we will store it. If memory is available, I can store my data. Okay, so that's one point. Now in terms of array, inserting an element or deleting an element requires extra process of shifting. Okay, if you want to insert a new element in your array, then that process is expensive. Why? Because we need to create a room to store that new value. So if you want to create that empty space, if you want to create that room, you have to shift your existing values, right? You have to shift your existing values. So even inserting or deleting both require shifting process. So that's one more overhead in terms of arrays, but that doesn't require in the linked list. So whatever drawbacks of arrays we have, we overcome those drawbacks in linked list. मतलब linked list का फायदा हो गया, array में जो problem है वो linked list solve करके देता है आपको. Vice versa is also true. जो problem आपको linked list में है वो array solve करके देगा. Random access in linked list is not allowed, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि next node कहाँ पे होगा, फिफ्थ या सिक्स्थ नोड कहाँ पे है, वी डोंट नो दैट. मुझे सिर्फ पहले नोड का एड्रेस पता है. सो आई हैव टू गो थ्रू 1 2 3 4 5 and then I'll reach up to 6. So random access in linked list is not possible. This is the drawback of linked list, which is possible in array. अगर आपको इंडेक्स पता है तो आप डायरेक्ट वो एलिमेंट ले सकते हो. array of 6, 7th एलिमेंट दे देगा आपको. So random access is not possible in linked list, but it is possible in array. Then extra memory space for pointers is required in the linked list, which is not needed in the array. Array के लिए index आपको maintain नहीं करनी पड़ेगी. You need not to have extra memory for indexes, right? Just we need to traverse it, और traversal के लिए I loop control variable लेते हैं हम. That doesn't mean कि array को वो variable चाहिए, right? Whereas here in the linked list, हर एक नोड के अंदर एक नेक्स्ट पॉइंटर है. जितने नोड क्रिएट करोगे उतने पॉइंटर्स आपके साथ आएंगे. सो दैट नीड्स द एक्स्ट्रा मेमोरी विथ ईच एलिमेंट इन द लिंक्ड लिस्ट. सो दैट्स ड्रॉबैक ऑफ लिंक्ड लिस्ट. सो वी हैव लिस्टेड few minus points of arrays and linked lists here, and those minus points becomes plus points in the opponent data structure. एरे के माइनस पॉइंट लिंक लिस्ट में प्लस हो जाएंगे, लिंक लिस्ट के माइनस पॉइंट्स एरे में आपको प्लस हो जाएंगे. सो दिस इज एरे वर्सेस लिंक लिस्ट पार्ट. देयर मे बी अ क्वेश्चन लाइक डिफरेंशिएट एरेज एंड लिंक लिस्ट. तो ज़्यादातर यही डिफरेंस आपको लिखना है. लास्ट में एक एग्जांपल लिख दो. एरे लुक्स समथिंग लाइक दिस, लिंक लिस्ट लुक्स समथिंग लाइक दिस. एरे नीड्स एलिमेंट्स, लिंक लिस्ट नीड्स नोड. नोड का स्ट्रक्चर दिखा दो. सो very easily you can have 5 to 6 differences between these two. Okay, now how your linked list is being maintained inside the system. Operating system उसको कैसे maintain करेगा? So let's discuss, or let us understand, this table is your memory. Actually consider this table is as a memory, your memory. Now operating system is going to maintain your entire memory, where it knows कहाँ पे डेटा है और कौन सा ब्लॉक खाली है, what is free and what is occupied.
So operating system is going to maintain your memory in chunk of blocks. अपनी मेमोरी जो है उसको ब्लॉक में डिवाइड करके वो अपने पास रखेगा. So if we consider those blocks as a rows in the table, okay, अगर वो ब्लॉक को हम एक रो मान ले यहां पे, and all those blocks have some addresses, अगर ये रो नंबर जो है उसको हम एड्रेस मान ले, consider this row number as the address of that block, then it works something like linked list. क्या होगा? नंबर ऑफ नोड्स, वो नोड एक तरह से आपके ब्लॉक हो गए. एवरी नोड हैज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. सो मान लो कि ये आपका पहला नोड है विच कंटेन्स h इनसाइड एज अ डेटा. तो वो क्या करेगा? डेटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा. इफ देयर इज 4, if there is address 4, which means the next node is at this place. यहां पे आपका next node आ गया. So you have a next node at address 4 and you have a data E. Second data is E. Now then your second node gives the next address 6. So you will jump to that address and you will find the third node. So third node मिल गया आपको L. And from that third node you found the address of next node which is 7. So when you go to 7 you will have the next node. Next L. So till now you have started with H, E, L, L. Now from that part you have the address of next node 9. So you jump to the 9, address 9, and you have the next node where you have data part O. And that gives the next address as -1. Now address can never be negative value, which indicates this is the end of my linked list. Now whatever we call null, here in terms of numbers, we say -1. So -1 indicates this is the last node and my linked list is over. यहाँ पे खत्म हो गया. You stop your process here and you have the entire word hello. So from your table you have row number 1, 4, 6, 7 and 9. So from your memory these many blocks you have used. So बाकी के ब्लॉक का क्या होगा? जितनी भी रोज आपको खाली दिख रही है, those are free memory, and those free memories are being maintained by the operating system. So operating system is responsible for defining the status of your memory. So what happens there? Along with your data, HELLO, hello, which is starting from this pointer start, operating system will maintain another linked list which will remember all free memory blocks. जितने भी free memory blocks हैं उसको operating system याद रखेगा इन लिंक लिस्ट मैनर. मतलब हर एक नोड का एड्रेस उसको याद नहीं रखना है. वो क्या करेगा? वो भी लिंक लिस्ट में जाएगा. सो इट विल मेंटेन अ लिंक लिस्ट पॉइंटेड बाय अवेल. अवेल मतलब अवेलेबल है. सो इट इज गोइंग टू पॉइंट द फर्स्ट एम्प्टी ब्लॉक. सबसे पहला जो एम्प्टी ब्लॉक है वहां पे पॉइंट करेगा. And then that free memory block is going to give you the address of next free memory block. So next memory कौन सी free है? At row number 3. Okay, 3 पे खाली है. Then next is where? At 5. Okay, 5 पे खाली है. Then next at 8. Okay, 8 पे खाली है. And if there is -1, then this was the last
free block available. So operating system internally is going to maintain a linked list for available memory. जितनी भी मेमोरी अवेलेबल है उसके लिए वो एक अंदर अपना खुद का लिंक लिस्ट बना के रख लेगा. तो जब कभी भी आपको मेमोरी चाहिए, व्हेन यू डू मैलॉक एंड कैलॉक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो इस अवेल के पास जाएगा, अवेल से रिक्वायर्ड मेमोरी लेगा, अवेल को अपडेट करेगा और जो मेमोरी मिली है वो आपको दे देगा. लेट्स रिपीट इट. व्हेन यू डू मैलॉक और कैलॉक, मतलब आपको मेमोरी चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो सबसे पहले अवेल के पास जाएगा और चेक करेगा भाई अवेल के पास फ्री मेमोरी ब्लॉक्स हैं. अगर आपने 20 बाइट्स मांगे हैं तो अवेल के पास 20 बाइट्स अवेलेबल है या नहीं. इफ इट इज अवेलेबल तो वो क्या करेगा, 20 बाइट्स वहां से निकालेगा. सो इट हैज टू अपडेट अवेल. अवेल को अपडेट करके आगे रख लो, मतलब आफ्टर 20 बाइट्स अवेल को जंप करवा दो वहां पर. एंड देन दोज 20 बाइट्स आर गिवन टू यू. आपको दिया मतलब आपको उसका इनिशियल एड्रेस दे दिया. देन यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन दैट ब्लॉक. सो व्हाट हैपेंस if I already have start HELLO and I have maintained that linked list. So starting from 1, next is 4, then next is 6, then next is 7, then next is 9, and if I want to have the next node, अगर मुझे एक नोड और स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू यूज मैलॉक और कैलॉक. ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा अवेल के पास. सो व्हाट इज अवेल, वेयर अवेल इज पॉइंटिंग टू, अवेल कहां पे पॉइंट कर रहा है, 2. सो 2 वहां से मुझे एक ब्लॉक देगा वो. So it will allocate me a block, this one, this is going to be allocated to me. अगर ये मुझे मिल गया तो अवेल अपडेट हो जाएगा. अवेल इज गोइंग टू बी अपडेटेड. अब वो 3 पे क्यों जाएगा, बिकॉज 2 के बाद क्या आता था, देयर वाज अ 3. नेक्स्ट अवेलेबल ब्लॉक वाज 3. सो अवेल को जंप करवा दिया नेक्स्ट ब्लॉक पे, एंड सेकंड वाला ब्लॉक जो था वो अलोकेट कर दिया हमें. नाउ इफ वी हैव रिसीव्ड दैट ब्लॉक नंबर 2, तो 9 के बाद मैं कहां पे जाने वाला हूं. सो आई एम गोइंग टू मेंटेन दिस एड्रेस. 9 के बाद -1 की जगह पे मैं नया ब्लॉक जो मिला है उसका एड्रेस 2 रख लूंगा. सो एट 2 आई कैन स्टोर माई न्यू डेटा x. I can store the new data x and that becomes the last node. तो फिर उसका next pointer जो है वो -1 हो जाएगा, right? That node next pointer will become -1 and all the remaining part will be as it is. अवेल जो भी है 3 से स्टार्ट होके 5, 5 से स्टार्ट होके 8 और 8 से स्टार्ट होके -1. The remaining free memory will be as it is. So if you visualize this process, तो वो कुछ इस तरह से रहेगा. You have start, right? You have your start and operating system maintains avail, जहां पे सारे के सारे ब्लॉक्स खाली हैं. So there are 2 different linked lists. Now जब कभी भी मुझे कोई एक नया नोड चाहिए, so I'm going to take that block, that empty block from avail. अवेल के पास जो भी ब्लॉक है वहां से मैं एक ब्लॉक उठा लूंगा. Well, in that case अवेल अपडेट करना पड़ेगा. अवेल जाएगा नेक्स्ट नोड पे.
और मुझे जो भी नया नोड मिला है, I can use that new node to store that data. So this is what happens when we do this process, creating a new node and inserting that new node to the last place in the existing linked list. तो कुछ इस तरह से काम होगा वहां पर. Now this entire process we have to do, मतलब हमें कोड लिखना पड़ेगा इसके लिए. नई मेमोरी चाहिए तो आप मैलॉक करोगे, मैलॉक से आपको उसका एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस को आप लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में स्टोर करोगे. सो यू हैव टू डू दैट पार्ट, यू हैव टू राइट प्रॉपर कोड फॉर दैट, एंड वी विल सी दोज एल्गोरिथम्स and code as well. Okay, so we will see how we can create a linked list, whether it is singly circular, doubly or doubly circular. You do have a practical in your practical list also. So is there any doubt till now? What we have seen is we have tried to understood what is linked list, then we have tried to understood what is singly linked list, how it can be maintained, what are the plus and minus points of arrays and linked lists, and how memory is being maintained by the operating system internally. Well, Harshdeep is asking, in this table, each column has a fixed byte. Well, this tabular format is just a representation for you, okay? It's not the thing that operating system actually creates a table in your memory. But आपको आसानी से समझाने के लिए हम अपनी मेमोरी को एक टेबल फॉर्मेट में देखते हैं. So it is not necessary that there is a column. अगर कॉलम बोल दिया तो हर एक कॉलम फिक्स साइज, मतलब एक कॉलम जो है उसके सारे एलिमेंट फिक्स साइज के हो जाएंगे. But that's not necessary in terms of memory. Parin is asking, can we index a pointer in a different file? Can we index a pointer in a different file by querying through the linked list? Look, you are asking something like using pointer, can you access a different file? Well, that depends. If you do have access to that file, you can. Otherwise, your operating system will deny. Means whenever there is a allocation of a memory, then operating system is going to maintain that right to use. Okay, कौन use कर सकता है इसको? If you are a super user, you can access your entire memory. But if you are a subscribed user, then there is a constraint. You can use this much amount of memory only, this much part of the memory only. You cannot access other memory, क्योंकि वहां पे फिर breach, data breach हो जाएगा. मतलब ऐसे तो कोई भी किसी का भी डेटा लेके चला जाएगा. So that comes under security part. Well, for easy searching, but look, what address, next address पे अगर आपको jump करना है तो कौन से address पे jump करोगे? How do you know that? आपके नोड जो है वो रैंडमली कहीं पे भी पड़े होंगे, जहां पे मेमोरी खाली होगी वहां पे नोड स्टोर हो जाएगा, लेकिन वो आपको नहीं पता है कि वो कहां पे. इट्स समथिंग लाइक पूरे क्लास के अंदर रोल नंबर 10 कहां पे बैठा है मुझे नहीं पता, तो मैं रैंडमली कहीं पे भी किसी भी स्टूडेंट को पूछ लूंगा, भाई बोल तेरा नंबर क्या है, वो बोलेगा 5. फिर से रैंडमली किसी को भी पूछ लूंगा तेरा नंबर क्या है, वो बोलेगा 13. 10 तो मिलेगा ही नहीं इस तरह से. उससे तो अच्छा ये होगा कि आप लीनियर चले जाओ, यू आर श्योर कि भी आपको कहीं ना कहीं डेटा मिल जाएगा. राइट, सो इजी सर्चिंग के लिए आप रैंडम पिक करोगे, देन रैंडमनेस is not feasible actually. Okay, any other questions?
Then let's start a singly linked list now. In-depth discussion. And now we are going to consider a singly linked list and we are going to discuss operations on a singly linked list. So this is how your singly linked list will look like. हर एक node के अंदर दो part, data and a next pointer. Okay, and you always remember the first node address using head or start. And each other node will be accessed from the previous node next pointer. The last node will have null value as a next pointer. And if you represent or if you write those addresses, then something like this one. Okay. So what is my head? It is address 2000. It is address 2000. Now again question comes, when I say a node which has a data part and has a next pointer inside my node. So how do I create this node in a program? So if I want to implement this thing, then how do I create this node in a program? Let's say right now you just want to store integer value. Your data is integer. So you can say, okay, I need integer data. And then there is a next pointer. Okay. There is a next pointer which stores the address. तो हमें pointer variable तो definitely लेना पड़ेगा. But we don't know what will be the data type of that pointer. वो pointer का data type क्या होगा हमें पता नहीं. It should point to the node, right? That next pointer is pointing to the next node. तो उसका data type node होना चाहिए. उसका data type something like node होना चाहिए. But what is node? Node is not an inbuilt data type. It is not a primitive data type. So we have to create this node. A node itself consists of the pointer to next node. So let us focus first. These two combinedly creates a node. तो C program का structure हो जाएगा. Struct, node, structure. So what is this node? It is a structure. Okay, what is that node? Node is nothing but a structure. So struct node. And that's how you have two members of a node structure. तो अपने प्रोग्राम में आप इस तरह से कुछ एक स्ट्रक्चर बनाओ. Now, if you want to define a new data type, जैसे हमने stack as a data type create किया, user defined data type, type def करके नया data type बना दिया. We can also create queue, circular queue, all those as a data type. So we can also create node as a data type. Well, in that case, what you have to do is you use type def keyword. Then the syntax says you give me a structure. नया type अगर define करना है तो एक structure देना पड़ेगा. So now we will give it a structure. Struct, एक structure देंगे. And then it says give it a new name. इस structure को नया नाम दो. We will give it a new name called node and semicolon. So that's the syntax of type def statement. Type def, define a structure, give it a name. Now what this structure will be? Node के लिए अगर मैं structure बना रहा हूँ, then it is going to have two members inside, integer data and a pointer variable next.
नाउ रिमेंबर, जब हमने स्टैक या क्यू एज अ न्यू डेटा टाइप बनाया तो स्ट्रक्चर को कोई लेबल नहीं दिया था. वी हैवंट रिटर्न एनी लेबल हियर. बट नोड के केस में हमें यहाँ पे एक लेबल देना पड़ेगा, बिकॉज ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है, it requires that structure label. So we have to write that label here. नया डेटा टाइप तो 4th लाइन पे डिफाइन हुआ. नया डेटा टाइप 4th लाइन में डिफाइन हुआ. तो 3rd लाइन में तो मुझे वो डेटा टाइप नहीं मिलेगा. 3rd लाइन में मुझे क्या मिलेगा? 1st लाइन में मैंने जो नोड स्ट्रक्चर बनाया वो स्ट्रक्चर मिलेगा. So here compulsorily we have to label this structure, and this is how you can create a new data type called node in your program. अगर ये बना दिया तो अगली बार जब कभी भी आपको नोड चाहिए आप आसानी से डिक्लेयर कर पाओगे. और अगर वो नोड, लुक दिस इज अगेन अ पॉइंटर वेरिएबल. समझो यहाँ पे, व्हेन यू डिक्लेयर नोड पॉइंटर n, that is just a pointer variable n. It is not a node. n खुद कोई node नहीं है, that's a pointer variable. What you have to do is you have to go for malloc. नोड के लिए आपको मेमोरी अलोकेट करना पड़ेगा. Now when you do this malloc, तो मेमोरी के अंदर से आपको उसके लिए एक ब्लॉक मिलेगा, and that block will be the size of the node. And when you typecast this memory to the node pointer, then you will have portion inside your memory. One will be data and another will be next. And when you store that address in n, you will have this link. Okay, फिर से, when you declare a pointer variable for node, it is just a pointer variable जो एक एड्रेस याद रख सकता है. उसको सिर्फ एड्रेस याद रहेगा, पूरा नोड नहीं. उसके पास पूरे नोड की मेमोरी भी नहीं है. So when you declare a pointer variable for node, it is a normal pointer variable. Then we need to allocate a memory separately. So we'll have a memory for our node, and that memory address we are going to store in pointer variable n. तो वो n जो है वो पॉइंट करेगा अपनी मेमोरी को. And then using that n points to data, आप डेटा एक्सेस कर पाओगे. n points to next, आप नेक्स्ट पॉइंटर एक्सेस कर पाओगे. You can access it, you can update it, whatever you want, do it now. अगर डेटा स्टोर करना है तो स्टोर करो, एक्सेस करना है तो एक्सेस करो, जो करना है कर सकते हो. So that's how you create your new node and update your pointers, update your data in memory. This is what you are going to do in your program actually. When you write a program for linked list, आपको कुछ ये करना पड़ेगा. आपको एक नोड का स्ट्रक्चर बनाना है. Then you are going to maintain address in a linked list. हर बार आप एड्रेस ही मेंटेन करोगे तो नए नोड का पॉइंटर लेना है. Point. Allocate a memory runtime, because look, we have to go through runtime memory allocation. User will decide कि भाई मेरे पास नया डेटा आया. That will be at runtime. यूजर ऐसे तो नहीं बोलेगा कि भाई 5 वैल्यू है तो 5 नोड बनाओ. अगर 5 वैल्यू पक्का है, 5 ही वैल्यू है तो फिर एरे ले लो. Why do you go for linked list? When your data is larger and initially you are not aware that how much it will be, means what will be the size of that data, then you go for linked list.
So everything happens runtime, and runtime आपको malloc ही करना पड़ेगा. There is no way you can go for static memory allocation. So we go for pointer, we go for malloc, we have a memory, we have the address, we store that address, and बस 60th स्टूडेंट क्लास में बैठा है, जैसे ही नया D2D एडमिशन होगा, मैं सिर्फ वो लास्ट स्टूडेंट को बोलूंगा भाई D2D 1 तू याद रख ले, उसके बाद मेरा काम खत्म. अब जैसे ही नया D2D स्टूडेंट एंटर होगा 2, D2D 1 को बोलूंगा भाई तेरे बाद ये आता है, याद रख ले, एंड सो ऑन. सो वो लिंक बढ़ता जाएगा. Now that is insert last. नया स्टूडेंट जो आया वो आगे, मतलब अपना जो नंबर सीक्वेंस है वो आगे बढ़ता है. Now what if D10 स्टूडेंट रिवोक हुआ? Previously D10, previous semester D10 student revoke हुआ. That series, enrollment number series will be something from the previous year. तो उसको आगे रखूंगा मैं. अब यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट जो रिवोक हुआ है, उसको बोलूंगा तू पहला स्टूडेंट है, तेरे बाद रोल नंबर 1 स्टार्ट होता है. दैट इज इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट फर्स्ट. व्हाट इफ कोई स्टूडेंट बहुत ही नोटोरियस है, उसको 2 वीक के लिए रस्टिकेट कर दिया और 2 वीक के बाद वो वापस आया. Roll number X, I don't want to point out anyone, so then X minus 1 has to remember this is the next one, and that revoked student has to remember who is the next X plus 1. Inserting somewhere in between. कोई अपनी जगह से नहीं हिलता, सिर्फ वो याद रखते हैं कि who is the next one. That's it. So that's insert somewhere in between. वो insert in between जो है आप कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो. इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट आफ्टर, या इंसर्ट एट अ गिवन पोजीशन. ऑल दीज आर नथिंग बट लिंक लिस्ट इंसर्ट ऑपरेशंस. Insert first, insert last, insert before, insert after, insert at a given position, insert in a sorted list. All these are different insert operations on a linked list. We'll see that. लेकिन अगर कहीं पे भी insert करना है, then you first need to traverse your linked list, right? You have to traverse your linked list first, and let us see how we can traverse it. लास्ट में इंसर्ट करना है, बीच में इंसर्ट करना है, तो मुझे वहां तक जाना पड़ेगा. I have to go to the particular student and tell him this is your next student, this is your next person. So I have to go to that student. मुझे ट्रावर्स करके वहां तक जाना पड़ेगा. अब मुझे वो भी नहीं पता कि वो कहाँ पे बैठा है, सो मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा? रोल नंबर 1 से. अगर 15 नंबर का स्टूडेंट आता है तो मैं स्टार्ट करूंगा 1 से. 1 को पूछूंगा 2 कहाँ पे, 2 को पूछूंगा 3 कहाँ पे, 3 को पूछूंगा 4 कहाँ पे. आई विल गो अप टू 14, राइट? एंड देन 14 को बोलूंगा भाई अब याद रख, दिस इज द 15th वन. So wherever you want to go, that is called a traversal process. And how do we traverse a linked list? That we want to understand. Look, first आपको हर बार मिल जाएगा डायरेक्ट, because you remember that first node address. Head is always pointing to the first node. तो head points to data करोगे आप तो आपको D1 मिल जाएगा. लेकिन D2 कैसे मिलेगा? सो पहले आपको D2 तक पहुंचना पड़ेगा. Somehow you need to reach up to D2. अगर D2 तक आप पहुंच जाते हो तो आप उसका डेटा एक्सेस कर पाओगे.
अगर D2 का एड्रेस आपको मिल गया तो उसके बाद उसका डेटा भी मिल जाएगा. देन द क्वेश्चन कम्स, D2 तक पहुंचना है तो D2 का एड्रेस कैसे मिलेगा? हेड और स्टार्ट वॉट एवर यू हैव, उसके पास D2 का एड्रेस है, यस और नो? हेड और स्टार्ट वॉट एवर यू हैव, द फर्स्ट नोड इट हैज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. और वो एड्रेस कहां पे है? वो एड्रेस कहां पे है? That address is there inside the next pointer, right? So whatever head you have, if you access next pointer of that head, तो आपको मिल जाएगा D2 का एड्रेस. अगर एड्रेस मिल गया तो उसके बाद उसका डेटा भी मिल सकता है. तो फिर D3 कैसे मिलेगा? Somehow if you have found the address of third node, तो आप उसका डेटा आसानी से एक्सेस कर सकते हो. लेकिन आप बोलोगे कि भाई थर्ड नोड का एड्रेस मिलेगा कैसे? द थर्ड नोड एड्रेस इज स्टोर्ड इन द सेकंड नोड नेक्स्ट पॉइंटर. अच्छा, somehow if you can access the second node, तो आप उसका नेक्स्ट पॉइंटर ले सकते हो. Then the question comes, how can I access the second node? फर्स्ट नोड का एड्रेस मेरे पास है, उसका नेक्स्ट पॉइंटर एक्सेस करूंगा तो सेकंड नोड मिलेगा. सो दिस इज योर फर्स्ट नोड, उसका नेक्स्ट पॉइंटर एक्सेस करो तो सेकंड नोड मिलता है, उसका नेक्स्ट पॉइंटर एक्सेस करो तो थर्ड नोड मिलेगा, एंड थर्ड नोड का डेटा आप एक्सेस कर सकते हो. Oh, that's how you traverse, but this is not a feasible way. तो करेंगे क्या? Well, we have had हेड के नेक्स्ट को अगर मैं किसी और एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लूं, right, then that is nothing but this thing, a temporary value, which is the address of second node. Now this second node I already have in the temporary part. अगर वो टेम्पररी जो है उसका नेक्स्ट मैं कहीं पे स्टोर कर लूं, then it becomes the third node. Why should I go for a new node or the new value or the new variable? Always I can reuse that temporary variable. What I can do is I can reuse. Now बाकी तो क्या है, you are always accessing data. You are always accessing data. So that's the repetitive task. हर बार आपको डेटा एक्सेस करना है, that's the repetitive task, right? So it is something like if you call that temporary node a traversal node, TR, अगर आप उसको TR बोलते हो, then what you are going to do is you are always going to print TR data. आपको हर बार TR data print करना है, and you are going to repeat it. While we are going to repeat this process. Now I'll start my traversal with head. So पहली बार मुझे head का डेटा मिलेगा, and then what I'll do is I will access the next node from TR और उसको वापस TR में डाल दूंगा.
I'm going to update my TR. So TR को first node से jump करके second में डाल दिया. So when I continue this loop, दूसरी बार मुझे second node मिलेगा. And then I again update my TR. Second node से उसको उठा के third node पे डाल दूंगा. So it is going to traverse my entire linked list. ये while loop चलता जाएगा और आपका TR जो है फर्स्ट नोड से लेके एक एक जंप करता जाएगा, नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड, एंड सो ऑन. Where do you stop? When you reach to the last node. लास्ट नोड को प्रिंट तो करना है, लास्ट नोड से भी आगे बढ़ गया तो स्टॉप कर दूंगा. When your TR becomes null. So if your TR is not equals to null, you are going to continue. When your TR becomes null, you stop. So that's the basic traversal process of a singly linked list. We'll stop here for today, and in the next lecture we are going to have a look at that traversal algorithm, and based on the traversal process, few basic operations like display, counting nodes, searching value, and so on. So that we'll consider in the next lecture. Thank you everyone. Thank you for being part of this session. Online students may leave. Thank you. Join the next one.